forward. So this is very short introduction about Ishad Sab, and I would request sir to give a short insight about our forum, and then I will request every member to give a short introduction. So, like, my name is Abdul Barik. So I'm associated in a multinational company, and my native place is here. So, sir, please start. Abdul Barik Sahab, Yes, Ishad. I think as you said, everyone would first just give one line of introduction. Then I think we should start the discussion Yeah, or the yeah. That's why interaction. I'm requesting all members, team members. Please. Hello, I am Salim. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड आफ्टरनून, बोलिए। मैं दिल्ली में रहता हूँ। जी, ओके, मेरा आवाज थोड़ा खराब है इसलिए ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। कोई बात नहीं। ये जो एनजीओ का है, एनजीओ का हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। ओके, ये सीरीज ऑफ टॉक्स है ओके, और हर संडे हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ। एनवायरमेंटल इंजीनियर, ओके, ग्रेट। ओके, बाकी लोग एक एक करके बोल दे थोड़ा सा। बिटूपन जी, आप अपने बारे में बता दीजिए। ना बिटूपन साहब बोलिए। Hi, good evening, Ishad sir. Actually, I'm very close to Mr. Salim. Call him as my matlab as a Jiju. But I was working for the last many years, and now I've quit. I just quit my job. I'm in my notice period. But then again, when I was doing business in Guwahati, I was doing small bits of waste management with Salim ji. Then again, I came back to the corporate world. But now I'm going back permanently in first week of January and to be in the. I failed first time as an entrepreneur. Now I have decided now again to. I have no choice because my parents are not well. So I'm in Kolkata now. I need to go back to Guwahati and start my second innings as an entrepreneur, fresh from scratch, zero. Okay. Where obviously financially I have nothing in my hand also. Okay. No issues. We are all part of the team. Yeah, please. Sure. Mr. Abdul Amanullah, I think. Are you there? Yes. Okay. Hello. Yes, please. I'm Alim Abdul Hamid. I am Salim's brother. I live in Guwahati. Okay. And I am an affiliate marketer. I am work for Salim. Okay. I thank you for inviting me here. Anytime. Nice to have you here. Okay. Thank you. Anyone else? Sir, please start, sir. Okay. Someone has gone offline. Mr. Abdul Barik, there was someone called Nilufa there on the line. Actually, I'm not able to see. I'm in a market. So, sir, can you see? No issues. Let people join as and when they get time. Okay, we are waiting for 5 minutes. Then we start. Yeah, I think we should start. As and when, based on their convenience, the members can join. Right? So as of now, we have around 5 to 6 members. Yeah, and this is the first time I'm talking on this forum. I mean, it's great to. I think it's my privilege to be here, and this is the first time I'm talking. Basically, I was told by Mr. Abdul Barik to talk on a particular topic. But before talking on the topic, let me introduce myself first. I am Irshad Chaudhary. I am from, as of now, I am based in Jorhat, Assam. And I bring along with me 15 years of experience in the corporate world. And thereafter, I have been trying to do some consultancy, and later on, I am involved in entrepreneurship for the last 4 years. And with all the ups and downs, we are doing, as of now, we are doing okay.
And in the meantime, as I have been called to this forum today, my topic would be to talk about the fundamentals of starting a new business. If anyone has any questions or any points to discuss, maybe they can keep it after I finish, and they can, even if they have some questions in between, they can ask me, not a problem. And when we talk on this topic, I think our today's interaction will be more fruitful only if we have a two-way discussion rather than only me talking about that topic and then just a one-way communication. I think doesn't serve the purpose. So as of now, I have already introduced myself. We all have introduced now. Basically, if we talk of the fundamentals of starting a new business, it all starts with the reason behind why we want to do a business, why we want to start a business. Why? Because as you know, basically it's our inherent nature. It's our inherent interest to earn money or more money. It could be an interest of passion also to do something on our own rather than working for someone else or something similar. Yeah. So basically, if we talk about the fundamentals of starting a new business, it all starts with the need or the desire or the passion. Now, practically it all starts with the idea or a planning which we might be having since long, or in the short term, some plan has come in our mind to make a humble beginning on our own, right? Now, if we talk, we are all from India, and right now, if we talk in Indian scenario, vast majority of the people from India, as we know, as I understand, are from the lower middle class. And most of us, why we take education? We took education in some or the other field. Why? That we are going to do some job or some kind of, we're employed somewhere to settle in life. That's what we do most of the time. I'm not talking about the rich or the elite people. Yeah. And then after taking those experience, sooner or later, we start thinking about, can we do something on our own? That's where the business things comes up, So now, after working either in government or private sector, initially many people I have seen, they start business, and some people are really, they are born entrepreneurs. They may have been brought up or born in a family or environment where business is way of life. But it is not the case everywhere. So now, as I said, due to variety of reasons, we are taking up business as a source of income or whatever reasons I have talked. Now, the main thing is the important points to consider when we start a new business. Now, before starting a business, the very few things which we need to keep in mind, we need to have a proper understanding rather than just going, our hard work should not go in vain. So there has to be a planning, number one. With the planning, we also need to choose what we want to do, what is very close to our heart. It could be a product, it could be a service. Product could be anything. I don't need to define a product. Service could be anything, consultancy service or even a cleaning service, and there are many more services. Yeah. So now, if I give you an example as an entrepreneur, how we started it is basically, we took up just one product. And we have worked on it, we have a knowledge about it. That's where we start thinking about, I know this product, I know how to sell it, I know how to make money out of selling this product and giving a solution to the potential client. It could be a government client, it could be a private client. And we should also know what is the market potential for the product and which segments of market we are targeting. If you take up a very unique product, it could be a niche market. If you take a general product, it could be a bigger market for you. But it all depends on, you need to know which market you're going to serve with that product or the service. Now, apart from this market potential and segment, there are other things in the market you need to study. You need to put some time, very valuable, time is very important. So in that amount of time where you're going to invest, before you invest the money, you need to know about the market in short. Then whether it's an organized or an unorganized market, depends on which product you are taking up. Okay? So
for example, we take up one product, as you said, if we take a, suppose we take a cleaning service. I mean, the very, very simple example I'm giving. Cleaning service could be I mean, if you go to the hotel line, it could be a cleaning service. There is another thing called in hospitals and all, there's something called, as Mr. I think Imdadullah, as he said that he is an environment engineer. Nowadays, environment is a very important concern. That's where you get an idea that in environmental concern, what are the things government has mandated on us, to like recycling of products. This is also another business. So these are some of the examples I'm giving. As I will give one example about ourselves. Like we started initially with as a system integrator. Very simple example. System integrator does all these IT solutions. It could be right from surveillance solutions to IT solutions to land services and all these things. Apart from that, there is something which starts with a great idea. Like we started a business of just maybe around 1.5 years ago of refinished products. Refinish is something many people do not know what is refinished. Even we didn't know. When the idea struck our mind, we come to know that this line of product is called a refinish. Refinish means it's a kind of paints and related products. And how the idea generated, that we can discuss later when we have the interaction. Yeah. Now, after I am saying choice of products and services, then you need to know the market potential and the segment, including demographic, income levels of your customer overall, not the exact ones. Yeah. And overall, how the place is developing with the the market where you're going to serve. Now, another thing which I would be missing out if I don't talk is the financial background and the budgeting. When you do a business, when you are planning, what is your financial background? Either you have amassed some money of your own in your bank or wherever to do a business, or you're going to take a loan, or are you going to take it from your friends and families? It all depends on how you plan it out. But the best part would be if you have your own money to start it. It's your hard-earned money, so you need to plan it very well, and you need to keep in mind that you are not going to put all your money into that business. How much money you're going to put in the business, how much money you're going to put as a buffer, so that ultimately there are risks involved in doing a business. So after these three things, product, then the market segment and the financial background, there is something called risk factors. When we think about a business, it's not that you just get success overnight. Sometimes it takes time, sometimes it takes more time, sometimes over a very short period of time also, you get the return on investment, which we call ROI. Yeah? And then you need to know about your competitors. Based on your competitors, which product you have chosen and which market you have chosen, you need to do a thorough survey. I am not saying you are going to go to some market research organizations. I am as of now talking just like a layman who has started doing business in the recent years. Just we have done 4 years of in our business. We are still learning entrepreneurship. Yeah. So these are certain things. Then when you do the business plan, there's one thing very important. What is the type of entity in a new business? As I'm talking about the fundamentals of starting a business, what is the type of entity you are thinking about? Are you going to start it as a proprietorship concern, or is a partnership, or is an LLP? It all depends on what's your product and what's your business plan. This detailed discussion we can have. We can ask questions to each other. Should we start as a proprietorship, or there's something called one-person company also, OPC it is called. So that will take it up later. Now, these are certain things. Then what kind of business, based on the product and service, what kind of business? There could be a business of like you are taking a dealership of a product. That is one thing. It's a very organized market. But there's other thing called you don't want to take a dealership or something where you want to become a reseller or a trader of a particular product. There's your approach has to be different. As I said, we started with this refinished paints. We had put some time on it, maybe probably 3 to 6 months. That's where we started, and now, as of now, we are doing good. The questions can be asked later. Now, there could be one more way of doing business, like
just as a layman, there is a person who has money, who doesn't know how to do trading, who doesn't know how to do the physical trading, stock, and all these things. Probably that person comes from a background which could be a government job. Normally, government job people do not leave suddenly and do a business; they do a side business. It could be something like a shop or departmental stores, something like that. So for every product and a type of business you want to do, initially you need to have a proper plan and the type of entity, business entity, as I said, proprietorship, partnership, LLP, you want to, invest in. And then when you are through in all these points, that's where you start the real procedures to start the business. Like you form the entity, or you go for a, rent agreement, or you have your own premises. If you have an own rent, then you have to do the professional tax registrations and all. But I would suggest, if it is a proprietorship firm, is very, the liabilities you have towards lot of things are very less. But of course, for banks it is risky. But since you have your own, if you are having your own money, I think one of the ways to do it is a proprietorship concern. And then do your whatever registration required. For example, if you want to do a GST registration, right now I'm talking about the procedures after talking about all those points. Procedures you have to follow as per the entity you are forming. Like if you want to do the GST registration now, regardless of type of entity or the company, it all depends on, you have just started, you don't know what will be your turnover. So, am I audible? Is everybody here listening to me? Hello? Hello? Yes. Okay. I thought that nobody is Loud and clear. Please go ahead. Okay, fine. So now, what kind of registrations you need to do? These registrations will depend on, as I said, the business plan and the entity. Now, tax registration, immediately you don't need to a GST registration. For example, as I understand, anything below 20 lakhs turnover, you need not have a GST registration. So it depends on how maybe after 2 years you have crossed that mark. Then obviously you have to go for GST registration. Then there's other kinds of registration also involved, like if you have employees with you. Initially, proprietorship starts with just one person. It's a one-person company. Tomorrow you may, or maybe after 3 or 6 months you are growing, or after 1 year you are growing very well, you're doing well. You start recruiting people to work for you. When you start recruiting people to work up to 10 people, no problem. The moment you touch 10 or more, then you need to have some other kind of registrations like ESI, this is a employee, this insurance registration, it is state registration. Then if it costs 20 employees, then you have to have PF registration. Then there are some other kinds of registration as well. I think we all know that there's some registration called MSME. Although MSME, government gives a lot of incentives in this, I am myself not very well versed with that. We have done it as of now, to where we get some kind of exemptions when we are, participating in some kind of tender or supply. Where we get some exemptions, especially regarding the EMD and some kind of, we don't need to show our, turnover for the last 3 years. So these are certain aspects. Now, I think initially whatever I have said till now in the last maybe 5 to 7 minutes, I am sure all of you must be having some kind of question in your mind. So I think you should also shoot from your side any kind of questions, and maybe if I am wrong somewhere, correct me. Mr. Abdul Barik. Hello. Ishad, please repeat it. Okay, you are outside. Okay. Anyone else from the team? I'm sure you must be having some kind of questions, some points to add to what I said right now. So I think you are over, na? Yeah, I'm over as of now. As of now, I'm over. But I think it should go on for a few more minutes. We should have a two-way interaction. Just one-way interaction is not a fruitful interaction. It's my point. My way of thinking. Yeah, please. So I think you have explained the thought of business in very lucid and simple way.
and everyone I think understood it. So if anyone have any concern, आप लोग का कोई अगर क्वेश्चन है, कोई अगर जानकारी चाहिए, तो प्लीज come up and ask to इरशाद. आप लोग और बढ़िया तरीके से समझा देंगे. सर मैं हिंदी भी बोलूंगा, इंग्लिश भी बोलूंगा, आपको जो लैंग्वेज में पूछे. आसामीज भी बोल सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक एवरीवन विल अंडरस्टैंड आसामीज ओवर हियर इन दिस इंटरेक्शन. Yes, language is not a barrier. Yes, please. ईशान भाई, बोलिए. ईशान भाई, सुन रहा हूँ, बोलिए. नासिर भाई, सुन रहे, बोलिए सर. मैं पूछ रहा बिटूपन जी. हाँ बिटूपन जी कुछ क्वेश्चन पुट अप करिए. नहीं मेरा यही है कि like I could hear Irshad ji, and I also now have come to know that you are also an ex-corporate. That confidence level, because I had no choice but to quit my job because I was saying my parents were not well. I had to go back to Guwahati. Okay. Now, I talk to Selimji very often, and since I failed in my first entrepreneurship, right? Now again, obviously, I'm more into the insurance domain, right? Okay. I'm more into the insurance domain, so life insurance, general insurance, health insurance, everything. So whatever I have to do, it's like going back to my donkey years of 2002, where I started on my own, being a frontliner and going to reaching people and doing the business with their own. And I think so. I have to restart that confidence. So how do I bring it back? Because I've got so long used to the corporate world. And when I was an entrepreneur, I had this F&B business, along with the bank. So there I had a team, but I used to move to the market. So that is what I wanted to know from you. That you also said you started the business around 1.5 years back. Yeah. And maybe you started as a proprietorship, then you have a team with you, you are doing it more into that software part. So that confidence level. Okay. I'm very honest in this forum, that's what is missing with me. I know I'm also planning to do West Management with Selimji, but that's what is missing in me now. And that's what I need guidance. How do I bring it back? Okay. Because I've burned my fingers once. Okay. Okay, now should I answer to your question? Sure. Okay. Now listen. No one in this world is perfect. We know we are all learning from each other. As I said, when I started my whatever I need to say, whatever I talk in the last 10 minutes, I said that it should be a two-way interaction. It should be always a two-way interaction. Only one person telling or talking from their side and having their views is not an exchange of views. So we are exchanging views. Good to know that you have been in the corporate world. You had a failed entrepreneurship. No issues. Failure is a stepping stone to success. We all know. So one or the sooner or later, we all know that in the last 2.5 to 3 years, everyone had a tough time because of the pandemic. Right. Now, there's one more news coming up again. Normally, I don't immediately believe in news and all. We all feel we should be a diehard optimist. Whatever happens in this world, we have to keep trying. And where are you from, Mr. Bitupan? Where are you from? Basically from Guwahati. I'm born from Shillong, but basically from Guwahati. I did my education from Assam University, Jorhat. Okay, fine. Very close to where I'm staying. Okay, so I'm basically based in Jorhat as of now. I heard that. Yeah. So not an issue. I mean, in this digital world, we are not far away from each other now. Agreed. So we can guide you. Depends on. I will need your guidance because also I know when I talk to Selimji that there's a great opportunity in this waste management also in a big way. Selimji he can tell you my network is very strong. But whatever since I lost my confidence and I really burned my fingers very badly. That is where is like by 2nd January is my last working day now. So by 1st of January I'll be back in Guwahati, and I know then I have to start everything from scratch again. Okay. Right. Yeah. So that's right. I've been very candid and open out here. No issues. Since look, we are all as I said, I'll keep saying we all keep learning from each other. We need references. We need to understand, learn from each person their expertise, and see how do we
find a solution out of that. Don't worry, I will try in person. I'm saying from my side to any member in this group. If they need any kind of suggestion, if I also need any kind of suggestion from any of the members to do my business, to find out a product, to find the best, good quality or the best quality product at a competitive rate, we are all here to help each other. Am I right? That's right. Hello. हाँ जी सर. Yes, I agree with you. Bitupan. Yes, I said I agree with what Irshad has said. Yes, okay. हाँ मैं हेलो. हाँ जी सर बोलिए. अबरार भाई कुछ बोलिए. अच्छा, और कौन है ग्रुप में? कोई नए मेंबर्स ज्वाइन किए? मिस्टर जीशान अहमद इज देयर. Dr. Saab is there. Abra Dr. Saab is there. अबरार भाई बोलिए कुछ. ये जैसे हम लोग हॉस्पिटल के बारे में कह रहे हैं ना, जी. इसका प्लानिंग कैसे होना है इरशाद भाई साहब से पूछिए. डॉक्टर अबरार साहब. अबरार भाई. इरशाद साहब. बोलिए सर. डॉक्टर साहब नहीं है. नहीं है. डॉक्टर साहब इज वेरी मच देयर. आई कैन सी हिम. उनका माइक ऑन पे. सलीम भाई. हाँ अबरार भाई. आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ. हम सब सुन रहे हैं. बोलिए सर. जी सलीम भाई, मैं आज किसी और प्रोग्राम में बिजी हो गया और मैं भूल भी गया था. कोई नहीं, आप बहुत अर्जेंट था. हॉस्पिटल का देर से आया तो मैं अभी प्रेजेंट हुआ हूँ. हॉस्पिटल के बारे में आप बता रहे हैं कि अब्दुल भाई बोलेंगे या इरशाद साहब से पूछिए इसका प्लानिंग कैसे करना है. अच्छा अबरार साहब, आप बोलिए. आपका कोई खास क्वेश्चन है, पूछिए. देखिए, हम नया एक हॉस्पिटल का स्टार्टअप करने जा रहे हैं. वेरी गुड, बोलिए. तो उसके बारे में हमें आपसे प्लानिंग चाहिए कि कैसे कैसे करना है. ठीक है. आपके पास आपने साइट आइडेंटिफाई हो गया? जमीन है आपके पास? जी, साइट आइडेंटिफाई हो गया है, बिल्डिंग बना हुआ है. अच्छा. और रिमोट एरिया है. हाँ, बहुत सारे लोग हमें 50 किलोमीटर के रेडियस पे हॉस्पिटल नहीं है. अच्छा. तो मेडिकली तो फिट है वो जगह. ठीक है. अच्छा, वहाँ पे मतलब आपको लगता है कि अगर एक हॉस्पिटल खोलेंगे तो जो वहाँ के आसपास के जो पॉपुलेशन है, क्राउड है, यू कैन कैटर टू देयर रिक्वायरमेंट्स. एम आई राइट? यस, बिल्कुल. ओके. सो दिस विल बी अ प्राइवेट सॉर्ट ऑफ हॉस्पिटल, जैसे हम आसाम में बोलते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम, समथिंग लाइक दैट. एम आई राइट? जी, बिल्कुल. ओके. कौन सी जगह कौन से स्टेट में खोल रहे हैं सर? ये यूपी में है, रामपुर के पास में. रामपुर. अच्छा, मुझे यूपी इतना अच्छे से मालूम नहीं. मैं आगरा में 6 साल रह चुका हूँ. अच्छा. तो आगरा से कितना दूर है ये मुझे नहीं मालूम. आगरा से अबाउट होगा 250 किलोमीटर. 250 किलोमीटर. 250 किलोमीटर. अच्छा. तो टुवर्ड वेस्टर्न ईस्टर्न यूपी. टुवर्ड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड. ठीक है. ओके. जस्ट लाइक यू हेयर्ड अबाउट द रुद्रपुर, आई थिंक. हाँ, रुद्रपुर. हाँ जी. हाँ, नियर अबाउट इट. अच्छा, ठीक है सर. मैं आपको एक बात बताता हूँ. आप हॉस्पिटल का साइट है, आपके पास फाइनेंशियली भी यू आर रेडी टू इन्वेस्ट, करेक्ट? ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है. फाइनेंशियली भी हम लोग है स्ट्रॉन्ग. अच्छा. बट आप तो जानते हैं कि हॉस्पिटल के फाइनेंस में काफी पैसा भी लगता है और हमें अरेंज करना होता है. जी सर. इसके लिए तो हमारे पास प्लानिंग है. इसके आपको 2-3 चीजें. पहला, क्या आपने कोई आर्किटेक्ट हायर किया है सर? अभी तक आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग बनाया था वो आर्किटेक्ट हायर्ड है. बात नहीं है. ठीक है. आर्किटेक्ट जो हायर्ड है वो आपके जरूर एक कॉन्फिडेंस वाला बंदा होगा जिसको आपने दिया. आप किसी को तो जिस चीज को तो दे नहीं देंगे, करेक्ट? जी. तो जी, वो अच्छा हो गया. नंबर 1. आर्किटेक्ट हायर होने के बाद ये काम आप कब शुरू करना चाहते हैं? जल्दी से जल्दी? जल्दी से जल्दी. ठीक है. जब जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे ना सर, जब एक मीटिंग होगी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा. मेरे सामने ऐसा एक प्रोजेक्ट में मीटिंग में बैठा भी हूं, ऑल्दो हमारा काम अभी तक ज्यादा शुरू नहीं हुआ है.
क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपके जो भी जो सिविल काम होगा, एम आई राइट? नहीं, हम सिविल काम तो ऑलमोस्ट करा चुके हैं, बस कुछ करा चुके हैं? पार्टीशन चाहिए। अच्छा, हाँ जी, जी। देखिए ये क्लैरिटी बहुत जरूरी थी। अगर सिविल काम आप करा चुके हैं, दूसरा आता है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, उसमें क्या कराया आपने? वो भी हम करा चुके हैं, बस फिटिंग वायरिंग होनी बाकी है। वायरिंग नहीं हुई अभी तक ना? जी जी। मतलब पूरा कंप्लीट वायरिंग और जो इसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम और जो आपका पैनल बोर्ड लगेगा, ये सब चीजें आप लोग किसी ने दिया है आपको ये डिजाइन? अभी तक नहीं दिया है हमने। चलो ठीक है, मैं अगर नहीं दिया है किसी बंदे ने, मैं आपको एक बंदा दे सकता हूँ। ही इज नॉट ए वेरी कॉस्टली पर्सन और बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं। और वो ही इज फ्रॉम गाजियाबाद। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मैं आपको उनका नंबर भी दे दूंगा। आप मेरा नाम लीजिए तो आपको एक अच्छे रेट में वो बहुत, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिकल एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज होता है। आज मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा। हमारे बिजनेस, हम ट्रेडिंग में हैं। आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए इसलिए मैं शायद वापस बोल देता हूँ। हम लोग एक ट्रेडिंग कंपनी है, हम लोग रीसेल करते हैं। एक हो गया आईटी पार्ट, आईटी जो जितना आईटी का काम होता है ना, जो लैन नेटवर्किंग से लेके जो कंप्लीट जो लैन वायरिंग से लेके आपका कंप्यूटर से और सीसीटीवी सॉल्यूशन कंप्लीट जो सर्वर रूम बनता है ना, आपका भी ऐसे ही कुछ होगा, एम आई राइट? यस। ओके, तो उसमें हम लोग का एक और पार्ट है जो हम लोग ओनली सप्लाई देते हैं। सप्लाई मतलब एक जगह पे अभी हमने एक होटल बनाया, होटल और हॉस्पिटल में सप्लाई करते हैं। एक छोटा एग्जांपल दूंगा जो आपको शायद पता नहीं, बताया जरूर होगा कि जो वायर्स लगाते हैं आप, एक सिंपल चीज, वायर लगाते हुए आपको फायर रेजिस्टेंट वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये हॉस्पिटल है ना? तो ये चीज मैंने उन्हीं से सीखा था। एक एक चीज जो हम मिस आउट नहीं करना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल पार्ट जो अगर गलत वायरिंग हुआ, लोड कैलकुलेशन गलत हुआ, और एक कभी होता ना खास्ता, हम नहीं चाहते, आई मीन इंशाल्लाह नहीं होगा, लेकिन ये सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपकी हॉस्पिटल जब एक बार बन गई तो उस स्ट्रक्चर में या उस वायरिंग के उसमें चेंज करना, और यू नो, एम आई कमिंग टू द राइट पॉइंट? यस, तो वो ढंग से होना चाहिए सर। तो आई हैव वन पर्सन, मैं फ्रॉम गाजियाबाद। अगर आपको उनकी सर्विस चाहिए, वो आके आपका पूरा प्लानिंग कर देंगे कि वायर कैसा, कितना जाना है, कितना लोड होना चाहिए। हमें उनका मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर दीजिएगा। सर, बट मैं इस बीच में ये चाहूंगा कि मुझे एक टोटल जो प्रोजेक्ट कैसे चलाते हैं और क्या क्या चीजों की जरूरत होगी वो मुझे चाहिए। अच्छा, वो मैं आपको दे दूंगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पूरा एक प्रोजेक्ट के जरिए जो हम अप टू पेशेंट एडमिट करने तक क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या करना है। वैसे मैं मेडिकल ग्राउंड से ही हूँ तो मुझे काफी तो पता है ही, बट मैं ये चाहता हूँ कि कोई एक्सपर्ट आदमी और मिले। नहीं, आपको एक्सपर्ट ही दूंगा सर। वो ऑल्दो वो शायद उस वक्त मुझे वो जो ऑटोमेशन का काम होता है ना, जो हॉस्पिटल में जितने लो वोल्टेज का काम होता है, लो वोल्टेज में हो आपका सीसीटीवी हो गया, आपके जो पीए सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स हो गए, और जो इसके रिलेटेड कंप्यूटर रिलेटेड, उसमें वो मुझसे भी कुछ पूछेंगे बहुत सारा। उसमें मैं आपको जितना हो सके हेल्प कर दूंगा। मैं आपको अभी बिजनेस की बात नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है आप अभी काफी दूर हैं मुझसे, आपको हो सकता है वहीं से लोकली लेना पड़ेगा, तो उसमें हम आपको हेल्प कर सकते हैं। इतना मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। नहीं, आप मुझे उनका नंबर प्रोवाइड कीजिएगा, बट मुझे ना आप ये बताएं कि हमें स्टेप बाय स्टेप किस तरह से प्रोजेक्ट चलाना होगा ये, और उसका एक कंक्लूड पूरा जो ब्रीफ समरी है ना वो भी चाहिए। मैं दूंगा सर, सब चीज क्या करना है हमने। मैं टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज आपको इसमें हेल्प करूंगा सर, इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, बहुत अच्छा। तो Okay, in continuation to the Dr. Abrar Saab's concern, so I request Irshad, apart from the your technical requirements or structural requirements, so to establish a hospital, what are the other regulatory requirements, regulatory license may be required? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सर जरूर आएगा आपके इसमें, क्योंकि जैसे आज सलीम साहब है, ये आजकल हर हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि आप हॉस्पिटल शुरू हो गया, हॉस्पिटल अच्छा चल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल का जो डिस्पोजल मैनेजमेंट होता है, जो आपके वेस्ट डिस्पोजल, उसमें शायद आपके सलीम साहब आपको ज्यादा अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे। रेगुलरिटी चीजें जो उसकी है ना, सबकी अपनी अपनी एक एक्सपर्टीज होती है। सो सलीम साहब आप भी अपने अपने इमदादुल्लाह साहब जो हैं, थोड़ा सा इनको इसमें गाइडेंस दे दीजिएगा। बाकी गाइडेंस तो मैं दे दूंगा सर।
जो मेरे बस में मत रखे। जी जी जी, ओके। मैंने एक दो बार देखा है जी इरशाद साहब कि लोग लोग शुरू तो कर देते हैं बिजनेस करना, जी लेकिन 3 महीने 4 महीने के बाद ही शटर डाउन हो जाता है। अच्छा, इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इसका इसको शुरू से कैसे चलना चाहिए? इसका बेसिकली तो सस्टेन ए बिजनेस आपका प्लानिंग बहुत जरूरी है सर। अप्स एंड डाउन आएंगे बिजनेस में। ऐसा ऐसा कोई बिजनेस नहीं कि अपने आज इवन बड़े से बड़े आज आप नाम ले लीजिए। मैं आई मीन इफ वी टॉक अबाउट द बिगेस्ट नेम रिलायंस टाटा बिरला के भी कहीं ना कहीं से जब शुरुआत हुई थी जिंदगी में उनका अप्स एंड डाउन आया था, है ना सर। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज एलाइट लेवल एज ऑफ नाउ, बट एज ए लेमैन हमेशा मैं कहूंगा कि बिजनेस को सस्टेन करने के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। हम लोग डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते सर बहुत टाइम पे। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कॉस्ट कंट्रोल, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। मैं प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं वर्ल्ड का नंबर 1 ऑयल कंपनी का आपने नाम सुना होगा, आई वाज इन आरामको। मैं आरामको के रिफाइनरी में जिद्दा में 8 साल रह चुका हूँ सर। वहां पे प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन से कैसे कॉस्ट कटिंग की जाती है उसके ऊपर मेरा एक ग्रेड बढ़ा था, मेरा सैलरी इंक्रीज हुआ था, वरना तो वहां पे हम फिक्स उसमें ही रह जाते हैं काफी सालों तक। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, इस बेसिकली जिस भी बिजनेस को चलाइए उस ट्राई टू मेक इट प्रोसेस ओरिएंटेड रेदर देन यू नो प्रोसेस ओरिएंटेड होने से हर चीज का कैसे क्या जाना, प्रॉपर फाइलिंग, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ एनीथिंग नॉट डॉक्यूमेंटेड मींस नॉट डन। आई थिंक ऑल द मेंबर्स शुड, इफ दे डिसएग्री, कोई भी मुझे प्लीज बोलेगा मैं कहीं गलत हो तो। नहीं बिल्कुल सही है। अपने मैं हमेशा बोलता हूँ जी डॉक्यूमेंटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जी सर बिल्कुल। इवन जो प्लानिंग है, प्लानिंग भी दिमाग में नहीं होना चाहिए, प्लानिंग भी डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। जी जी। अबरार साहब आपका नंबर अब्दुल बारिक साहब के पास है ना? सबके पास एक दूसरे का नंबर रहता है। जी 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 बिल्कुल है। ठीक है ठीक है। अब्दुल बारिक साहब आपका नंबर मुझे दे देंगे, मैं आज आपको व्हाट्सएप कर दूंगा उनका नंबर, ठीक है? और क्लास से बात करूंगा मैं, आप शेयर कर दीजिएगा हमारे ग्रुप में। बिल्कुल, आप मुझे फोन कीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा सर। ओके सर, बोलिए आप। ये जो मीटिंग हमारा है ये यूट्यूब में रिकॉर्ड हो, सॉरी, ये जो मीट है ना यूट्यूब में रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा तो इसलिए मैं जो पार्टिसिपेट आज नहीं भी करे हैं ये बाद में देख लेंगे। कोई बात नहीं। तो उन सब के लिए, उन सब के बेनिफिट के लिए मैं एक लास्ट में पूछना चाहता हूँ, यह है कि हम कॉर्पस कैसे जनरेट करना चाहिए। कोई भी कंपनी हो या एनजीओ हो, वो फंड जनरेट कैसे करेगा और फंड को मेंटेन कैसे करेगा? ये सर एक जस्ट आई वुड से फंड को कैसे मेंटेन करेगा, क्या करेगा, इस पे इमीडिएटली एक वन लाइन आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम द फाइनेंस बैकग्राउंड। हमारे इसमें कोई फाइनेंस बैकग्राउंड का है क्या कोई? हाँ बिटूपन है, बिटूपन। तो बिटूपन एक्सपर्ट है, तो बिटूपन को बोलना चाहिए ना। बिटूपन बोलिए, आप भी कुछ अपनी तरफ से बोलिए। ठीक है, मैंने आपसे देखा है, बिटूपन आई थिंक अनम्यूट। मैंने आपसे देखा है। भाई आपका ऑडियो थोड़ा बंद कर लीजिए, आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रहा है बहुत बैकग्राउंड से। जिशन भाई, आप आपका ऑडियो थोड़ा म्यूट कर लीजिए। हाँ जी। जिशन भाई आप कुछ पूछिए। जिशान भाई आपका कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। मार्केटिंग का पूछिए। यही है सर कि ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए आज की मीटिंग में, कोई ना कोई पर्पस हो। तो आज का पर्पस ये था कि जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग छोटे स्केल पे की जाए, और जो 3-4 महीने का, क्योंकि लोगों को एडवर्टाइजमेंट करने में वक्त लगेगा जी। नो डाउट के 25 किलोमीटर इधर और 25 किलोमीटर इधर, वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है,
लेकिन इसके बावजूद भी वक्त तो लगेगा ही। अच्छा, तो उसके लिए कम से कम 4-5 महीने लगेंगे उठने में। तो 4-5 महीने का या तो हमें बजट पहले से एक्सेस लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस तो वही रहेंगे चाहे इनकम हो या ना हो। तो वो मैनेजमेंट वाली बात भी थी। और एक चीज और थी कि स्टार्टिंग में जो है तो थोड़ा थोड़ा उस पे शुरू किया जाए। तीसरे ये था कि जो सर वो डॉक्टर्स का हिसाब किताब है, वो डॉक्टर अबरार को मुझे नहीं मालूम कि मालूम है या नहीं है, कि जो डॉक्टर बैठेंगे उनको जाहिर सी बात है कोई कस्टमर आए या ना आए पेशेंट, तो उनको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। वो भी देखना होगा हम लोगों को। भाई हमें सैलरी पे रखना होगा स्टाफ और सैलरी को मैनेज करना होगा। स्टार्टिंग में हमें अपने आप से एनजीओ के अंडर मैनेज करना होगा। जब वो अर्निंग आने लगेगा तब वो वहां से सिस्टम बनेगा। ओके। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं अबरार भाई। जब तक हम कामयाब नहीं हो सकते तब तक हम जो ये मेन पॉइंट है स्टार्टिंग के, तो इसमें मैं ये बोलूंगा कि हम लोग सब मिलके चलेंगे तभी कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है। इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई भी एनजीओ है वो डोनेशन के ऊपर कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता। नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती भाई। अभी इस साल डोनेशन सपोज 1 लाख रुपया आ गया, अगले साल वो नीचे होके 60,000 हो जाएगा। आदमी कितना डोनेशन देगा? नहीं देता है कोई। तो मेरा क्वेश्चन यही था इरशाद साहब से कि हम कॉर्पस कैसे हम फाउंड करेंगे? ये सर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं क्योंकि मैं इस टॉपिक पे एक एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई विल डेफिनेटली एज ऑल्दो आई हैव ए कमर्शियल बैकग्राउंड, तो मैं ये हम डिस्कस करेंगे एट इंडिविजुअल लेवल। फिर हम इसको इसी फोरम पे वापस डिस्कस करेंगे व्हेन वी कैन हैव ए वर्चुअल मीटिंग अगेन। करेक्ट मिस्टर अब्दुल बारिक? सर बारिक भाई ऐसा है, कोई भी काम हो चाहे वो बिजनेस हो, एनजीओ, उनका कैपिटल नहीं है तो वो नहीं कर पाता आगे से। अगर कोई हो या कोई बिजनेस भी हो, उनके पास अगर कैपिटल नहीं है आगे वो डेवलप नहीं कर पाता है। हमारे साथ भी बहुत प्रॉब्लम आया था एज ए बिजनेस। तो बारिक भाई को ये बारे में पता है, तो उसका प्लानिंग कैसे करें, कॉर्पस कैसे डेवलप करें, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर हम अगले मीटिंग में बात करते हैं। श्योर। और हम बारिक भाई आप कंक्लूड कर दीजिए प्लीज। Okay, so actually our time was 30 minutes, but the session was so interesting, and Ishad has delivered it in a very good way, and I think everyone has benefited with this deliveries of the Ishad. So I would like Ishad, thank you again. So, and he will be our one member, and we'll invite you time to time. Thank you so much. Sure. Thank you. I'll do my best. Abrar sir, हम लोग Ishar bhai, I will anyway catch up with you. I'll take your number since you are in Jorhat and I will be in Guwahati now. And since I pass and my Alma. I speak out. Please note down. One sec. I'll just note down. One sec. Yeah, tell me. 9818 9818 43 2009. 2009. Yeah. 2009. Yeah. No, because my alma mater is on this number on WhatsApp on this number. I will send you because I my alma mater is Jorhat only. So somewhere maybe I can help you, you can help me. Because the current VC I call him Dada. Right. Okay. Yeah, so I was the general secretary of the university actually. Thank you. अच्छा लगा प्रेजेंट हुए हमारे यहाँ. So I am anyway going to WhatsApp you my number. Okay. Thank you everyone for giving your precious time. No, I would thank. I would thank everyone out here for giving me the opportunity to Salim ji. At least I was brought to this call. Thank you so much. Thank you everybody. Okay, thanks. Thank you.